Dear students, here is an activity in which you can see that roots from the grams and small seedlings are developing from the grams. What we have done? We have taken a disposable glass, or you can take anything, but the condition is that you have to make some holes in it so that the root can pass through it. Secondly, we have taken this another disposable glass in which we kept some water and we put it upwards so that is completely filled and the roots can reach to the water. In starting we can see that roots are not there, but don't worry, just keep your sprouted grams in it, and after some time, we have seen it in 2 days, roots are developed. And remember, water level cannot touch the level of your the container in which you have kept the seeds. आपको क्या करना है, आपने जो स्प्राउटेड ग्राम्स लिए हैं उनको एक ऐसे डिस्पोजेबल ग्लास में रखना है जिसके नीचे आप इस तरह से छेद कर सकें. इससे क्या होगा कि जो रूट्स निकलेंगी वो टुवर्ड्स वाटर मूव होती हैं. जो प्लांट की रूट होती हैं, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि प्लांटेशन किया जाना चाहिए, ट्रीज़ लगाने चाहिए, इससे वाटर लेवल मेंटेन होता है. तो ट्री की जो रूट्स होती हैं वो हमेशा वाटर की टुवर्ड्स मूव करती हैं. ये हमने कंटेनर वाटर लिया, ये सारी रूट्स कहीं से भी निकलेंगी, इन होल्स से निकल के इस वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी, सो दैट दे आर मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस इन अर्थ ऑल्सो. ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस वाटर कंटेनर में ऊपर से हमने एक और प्लेट रख दी. आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप डिस्पोजेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, आप किसी भी तरह कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं. और कुछ समय बाद, जैसे मैंने 2 दिन बाद कहा, तो 2 से 3 दिन हो सकते हैं. जैसी कंडीशंस होंगी उन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है. डियर स्टूडेंट्स, as we have sown some gram seeds, and after 6 days we can observe this. Our gram seeds are now germinated and converted into a small plant of a gram. See, its roots are also well developed. Okay, you can see these are the roots of the gram. Okay, means the seed which are germinated and converted into a plant, its upper part is that one and its lower part root is there. So after this activity you will be able to identify and observe the germination days and conditions required for a seed. Okay, I think all of you have done this one and recorded your observation. So I hope you are well known to the fact that a plant is germinated or growing from a seed, and it takes certain time for this growth. See how many leaves are there. If you count, you will see a complete pair of leaves is there. 1, 2, 3, 4, and some small are also there. Means in 6 days after sowing this we will find out this change. It may be possible that your plant takes some more time or some less time. So complete this activity and record your observation. Thank you and have a nice day.